Hey, I'm Kareena Kapoor Khan and this is Dabur Amla What Women Want. आज हम बात करेंगे about how patriarchy affects women. And who better to talk about this than my Veere, Swara Bhaskar, who is here to share her Dabur Amla story of strength with us. Please welcome the very talented and super versatile Swara Bhaskar. Hello and welcome on my show. Esteemed Kareena ji, आप वीरे की लुक में आई हैं. you know, Sakshi Soni. Of course, absolutely. So happy to have you and to be Listen, chatting. how cool this show is. I know, and I think you're actually the perfect guest to be on What Women Want. Who better than Swaraji to tell us exactly her opinion? My experience of Veere tells me never to believe you. Please. Because oftentimes this is a setup for a very ganda chop which comes my No, way. it's going to be बहुत ही अच्छा अभी controversial chat होने वाला है अभी. So Swara, Bollywood, people want you to stay away from your favorite word, feminism. You've been extremely vocal and very, very vociferous, about your opinion. So how difficult is it to be an opinionated woman in today's times? I think actually today, I think it's the easiest today. Okay. I don't know. I think that largely speaking, everyone, I think that having an opinion is considered to be a good thing. Yeah. It's a sign of strength कि आज की strong nari and आज की शक्तिशाली महिला, that kind of thing. And I think that popular culture में भी generally speaking काफी acceptability है कि आपको क्या लगता है, आप सच बता रहे हो. Yeah. It's seen as a good thing. Yeah. And I think that, and I'm sure you know this better than me, that how the perception of a celebrity has changed. I think like maybe earlier, stars had to be aloof. Yeah. And had to be like protected, but now if more a star open. is sharing, then it's seen as a good thing. Like, Yeah. they're so down to earth, they're so like us. It's considered a good thing. But you think it's easy in today's time to have an opinion and be that kind it's of easy, but then also, of course, if you have an opinion जो थोड़ा हटके है, for example, जैसे आप ट्विटर पे इतनी I think मुझे अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा. नहीं, but why? We want you to have that. We want to hear Swaraji. Yeah, so then you have to be prepared for जो Yeah. थोड़ी सी गालियाँ वालियाँ पड़ती हैं वो सब भी. Absolutely. Because having an opinion means that people will feel कि अच्छा ठीक है अब तुम ये बोल रहे हो अब we'll question you on it, defend करो अपने आप को, that kind of thing. I think patriarchy is very deep rooted. Absolutely. So how can we fix this? कोई quick fix solution नहीं है. ये एक ऐसी चीज है हमारा I feel कि हमारी जो पूरी civilization है वो actually एक patriarchal base पे structured है ना. Like human society begins with the exchange of women amongst the kins. जब like वन मानुष के time से, right? So that's what our civilization is based on. So our whole notion of family actually is one जिसमें father is the head of the family. The head of the family. He's the bread. Yeah, he's the bread, and yes, that's the control, and the lineage is passed on from the male, which is fine. That's how we've evolved. Yeah. But I think it's important to be conscious of it, and I always feel in a sort of, it's kind of sad almost कि सारे जो isms है ना जैसे racism के खिलाफ लड़ाई या class inequality के खिलाफ जो लड़ाई है या इंडिया में जो आज़ादी की लड़ाई थी, ये सारे ना थोड़े easy थे क्योंकि जो दुश्मन था वो कोई बाहर आइडेंटिफाइबल इंसान था, या तो ब्रिटिश था या जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट थे या जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार था. फेमिनिज्म की जो लड़ाई है ना वो इट्स आपके जो नॉट दुश्मन बट आप यू हैव टू फाइट द पीपल यू लव द मोस्ट, योर फादर, योर ब्रदर, योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड. दैट्स द फर्स्ट that's our first experience of patriarchy, right, within the family, and sometimes we don't realize it, and वो भी realize नहीं करते. Very like पापा घर आएंगे तो हमेशा कि मम्मी लड़की को बोलेगी बेटा पानी दो, पापा को चाय बनाओ. कितने लड़के बनाते हैं. मेरे भाई मतलब मेरे घर में मैंने भी कुछ काम नहीं किया कभी, so ऐसे आप भी पैर ऊपर करके बैठ गई. but it is a thing, right? Yeah, of course, absolutely. So I always feel कि feminism में इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा because as women हमें लगता है कि यार so it will take time. There's no I feel immediate quick fix or solution. I don't think so, but I think things are changing. Right? I think कि women अपने आप को अब express कर रही हैं, अपने हकों के लिए खड़ी हो रही हैं. But talking about these masala kind of films, which people enjoy it, but should we be looking at it from a more responsible angle, the kind of parts that women are playing in it? I think so. I think कि
अवेयर होना जरूरी होता है. I always feel कि यार फिल्म्स कहानी है. Yeah. वो नारा नहीं है, वो एक मैनिफेस्टो नहीं है पॉलिटिकल पार्टी या किसी मूवमेंट का, वो कोई टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है फेमिनिज्म पर Yeah. या किसी भी और इज्म पर. वो एक कहानी है. So that whatever you're showing, उसका जो you know, the drive, the emotionality has to be correct. Yeah. But still, I think it's good to be aware, and I feel कि it's a learning process because मुझे सबसे ज्यादा ये realize हुआ था रांझना में, because Ranjana and Bindiya was one of my favorite characters, Yeah. and I really liked that film, and my boyfriend had written it, and then when it came out, it got banned by Oh, did feminists for glorifying stalking. कि आपने स्टॉकिंग को and छेड़छाड़ को एक खास किस्म को क्यूट बना के दिखाया. एंड मेरे को बहुत दिन तक लगता रहा कि नहीं यार, दैट्स नॉट ट्रू. हमारा ये हमारी मंशा नहीं थी, हमारा इंटेंशन नहीं था. बट देन आई थिंक एज टाइम पास्ड आई वाज लाइक एक्चुअली मे बी यस, यू नो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बिकॉज वो कहानी इतनी धनुष के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से है. सो आई थिंक इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, एंड आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ, यू नो, ऑफन टाइम्स हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब कोई आपको बोलता है कि यार आपने ऐसा क्यों दिखाया ये. So I feel कि यार offend मत दो, उनकी बात सुन लो. Absolutely. Maybe keep it in mind. Like Jab We Met is one of my most favorite films. And I it's think a commercial film, It's a commercial film, and I think it kind of, you know, it in a very unsaid sort of way. Jab We Met and Queen, these two films, I feel, they changed the heroine, and you know, like in such a silent sort of way. And for me, they are both in different ways feminist. Like, I mean, of course, these are big tags, but in some small way, they actually are, you know, very liberating. It was films. a start actually, Jab We Met, and then Queen followed And then suit. Queen followed, So it was, absolutely. Swara, there are a lot of women who protect patriarchy too, right? Yeah, of course. And I'm sure we've all been trolled by them. So what is your opinion on that? I mean, I think that, you know, actually, there is not that much difference between मर्द कैसे सोचते हैं, औरतें कैसे सोचती हैं, बिकॉज हम हैं तो एक ही कल्चर और एक ही समाज का हिस्सा. तो अगर एक सर्टन थॉट प्रोसेस है या एक सर्टन सिस्टम है तो उसमें तो हम दोनों इक्वली शामिल हैं. एंड आई नो इट्स वेरी चीजी लाइन, वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है. बट इन सम सेंस द फैक्ट इज दैट विमेन आर द पिलर्स ऑफ पेट्रियार्की ना, बिकॉज इन नॉट, आई मीन इन द सेंस दैट अगर like I mean it's easier said than done, but अगर औरतें नहीं एक्सेप्ट करती तो ये इनइक्वालिटी होता ही नहीं, राइट. एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव टू गो बैक टू द डिबेट कि उनके पास पावर ही नहीं थी, एक्सेप्ट चॉइस ही नहीं था, एक्सेप्ट करें या ना करें, एटसेट्रा, व्हिच इज फाइन. बट आई थिंक दैट डेफिनेटली, एंड आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड द ट्रोलिंग बाय द वुमेन मोस्ट व्हेन ट्वाइस. एक बार जब मैंने वो ओपन लेटर लिखा वेयर आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट जोहर सीन, यू नो, द इन पद्मावत, एंड उसमें because I used the certain word describing a body part which I feel is very natural. I mean a woman talking about her body. उस खास शब्द का इस्तेमाल के इस्तेमाल से बहुत सारी औरतों को बहुत दिक्कत हुई. And I was like, इसमें, you know, but इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा शरीर है, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, like what's the big deal? So I think that हाँ, you know, होता है. But I feel कि I mean, ठीक है यार. I think ultimately for me, feminism is about कि यार every women should have the choice to make the decisions. Men and women should be equal. And men and women should be equal. And I've always felt कि feminism men को भी liberate करता है. Absolutely. You know, because patriarchy, we don't realize men पे भी बहुत बोझ डालती है. You know, ऐसा क्यों? A lot of pressure on them. ऐसा क्यों है कि लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार नौकरी चाहिए, घर पैसे भेजने हैं, माँ बाप के लिए घर बनाना है, you know, बच्चों को स्कूल भेजना है, all that pressure. It's so sad. Even in my own house, which is a fairly liberal house and liberated, and you know, my parents have been very conscious, progressive people. मुझे सालों साल तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मम्मी पापा के लिए घर बनाना है. And my brother had this tension since he was like 15 years old. And how tough is it to call out patriarchy in your own home when you see it happening? Yeah, I mean, I think that of course it's tough, right? क्योंकि सबसे मुश्किल चीज होती है खुद से सवाल उठाना या खुद पर सवाल उठाना, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, your brother, like you said, बॉयफ्रेंड. मुझे लगता है अक्सर बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो बहुत बिना रियलाइज किए हुए. बट यू नो, आई ऑलवेज फील कि इसको एक जंग ना देख के, it, you know, it has to be a conversation, because you know, I feel sometimes bad for the boys also. Like हमारे generation के boys, because यार उनकी parenting में भी कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें equip कर रहा है डील करने के लिए एक ऐसी औरत के साथ जो strong है, opinionated है और जो जिसे अपनी मर्जी करनी है. क्योंकि उनको भी बचपन से यही सिखाया गया है.
एक वो राजा बेटा वाली मेंटालिटी जो होती है ना, Yeah, absolutely. silently they have also imbibed all that. So like, and I've actually had this experience like in my own relationship where Himanshu would, we didn't realize until one day I was like, actually I had a fight with him about this, and I was like, you never talk about your work to me. Like, why? We Yeah, work why? in the same industry. Huh. But I would think that you all both would always talk about. no, like he'll work. discuss his scripts and all, but like his office is a very sanctimonious space, and he gets very like, office. If I'm like, oh, I'll just drop into the office to, and he gets like very like nervous and कि नहीं office क्यों आना है ना. I'm like, bro, मैं actress हूँ, मैंने 3 फिल्में करी हैं आनंद राय के साथ. Yeah, I have. But what is the reason that he was like that? And he wouldn't talk about his work. And he then said to me, and we spoke about it, and he was like, यार पता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी अपने घर में अपने फादर को मम्मी के साथ ऑफिस के बारे में बात करते हुए नहीं देखा. वो हमेशा जब घर आते थे वो ऑफिस में छूट जाता था. उन्होंने कभी अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं की, कभी अपने काम को डिस्कस नहीं किया. वो घर आते थे, मम्मी बताती थी घर में क्या हुआ, इनका फोन आया, a very typical kind of situation. Like a typical middle class, Uttar Pradesh family. And I was like, which is fine, but yeah, your mummy is different, I'm different. So it's things like this हम realize भी नहीं करते हैं. So I think that. Do you think that Bollywood films patriarchy को बढ़ावा देता है? यार बॉलीवुड भी तो हमारे समाज का ही हिस्सा है ना. तो जब समाज में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है तो बॉलीवुड में कहाँ से आ जाएगी? Yeah, exactly. Like you said, Bollywood films are not technically meant to be changing society also in a way. No? It's I not always like feel it's the other way around. कि society बदलेगी तो बॉलीवुड बदलेगा. Absolutely. Audience बदलेगी तो बॉलीवुड बदलेगा. And that's what we have seen, right? Social media के आने के साथ, suddenly all the producers and all the directors can actually hear the audience's opinion. Like, much closer than before. And you can't avoid it now, And there's like a live, kind of answer. It's like, oh my God. So I think that actually it has to be the other way around. But I think Bollywood ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. मतलब उस जमाने में भी, like सुजाता अगर देख लो, या बंदनी, या मदर इंडिया, like coming back to your bold scene in Veere, I mean, the fact that it's, happened, I think it's only because cinema is changing in a way. Yeah, of right? course. I mean, I don't think this scene would have been possible 10 years ago, or even I think even 5 years ago. I don't think so. Yeah. So what do you have to say about your particular scene in Veere? I mean, when जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो रिया ने एक्चुअली मुझे साक्षी ऑफर नहीं किया था. Yeah, I remember. उसने मुझे मीरा का रोल ऑफर किया था. एंड मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुन के, ये सीन सुन के मैंने रिया को कहा कि यार रिया मुझे ये फिल्म करने दे. ये सबसे कंट्रोवर्शियल सीन होगा तो स्वरा जी ने यही कहा कि मुझे यही करना है. I was like, it's different. ये it's like ट्विटर पे थोड़ी और बातें होंगी. नहीं, इतना भी नहीं सोचा था. But I was just like, this is the most different thing. जो मैंने कभी नहीं किया. मुझे नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा अगर मिलेगी कि नहीं. बट मुझे ये नहीं लगा था कि इतना बवाल टाइप हो जाएगा, सीन को लेकर. But do you think it was appreciated more, or do you think that you were trolled more? See, मेरा केस थोड़ा अजीब सा है, बिकॉज मेरे जैसे आपके डेडिकेटेड फैंस हैं जो बिल्कुल एक आर्मी है, मेरे डेडिकेटेड हेटर्स हैं. तो वो बिल्कुल ऐसे शिद्दत के साथ नफरत करते हैं मुझसे. I don't think so. It's really true. और कुछ उनमें से कुछ ने ट्विटर छोड़ के इंस्टा पे भी अकाउंट खोल लिए सिर्फ मुझे ट्रोल करने के लिए. So I'm like, this is real sincerity. So उन सब ने तो ऑफ कोर्स यूज किया क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि लार्जली हमारी फिल्म को अप्रिशिएट ही किया गया. और सिर्फ ये सीन नहीं, बट हर तरीके से. आई मीन, आई थिंक योर कैरेक्टर ऑल्सो. आपने कब एक हीरोइन देखी है जो कमिटमेंट फोबिक है? हमारी ये कमिटमेंट फोबिया हमने सिर्फ अपने बन्नी और अपने कबीर और अपने लड़कों को दिया है. वो सलमान कैरेक्टर इन जब प्यार किसी से होता है, और सैफ इन सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. You've never seen a heroine be commitment phobic. So all the characters were quite. Or Sonam's character, all of that scene, or Shikha saying I haven't had sex in a year. Who says that, in Hindi films? But definitely, I mean, I think the best scene of the film was the bold scene that you did, because I think it was absolutely amazing. No, the best scene of the film was where you guys fell off the chand. Oh God, yeah. Listen, I want to do that in my Sangeet, I've decided. पहले हिमांशु को पूछ तो लो. He's also commitment phobic. He's also fine. So he's playing Kalindi's character. He's playing Kalindi's character. So Swara, लोगों को लगता है कि patriarchy affects only women. What do you think? I think that's completely untrue, because I think कि patriarchy जिस तरीके से औरतों को एक खास किस्म के दायरे में बांध देती है, वो एक्चुअली मर्दों को भी एक खास किस्म के दायरे में बांध देती है. वो मर्दों पे एक खास किस्म के मर्द होने का बर्डन
डालती है, you know, कि मर्द कमाएगा, परिवार का ख्याल रखेगा, हेड ऑफ फैमिली है, तो एक खास किस्म, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, जो सबसे एक टिपिकल मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक I love boys who cry. Yeah, but like you know how it is. Yeah, but when it is you're- that norm. Yeah, Yeah, it is. men don't cry. या बच्चे जब छोटे होते हैं तो जो हमेशा you know I always feel कि ये जो gendered वो होता है, बच्चों को जो टॉयज मिलते हैं ना उसमें आप Yeah. देखते हैं कि बॉयज को हमेशा कार्स एंड गन्स Girls मिलते हैं और have to play गर्ल्स with the को वो dolls. हाँ हाउस हाउस घर घर एंड वो बर्तन एंड लाइक Yeah. सो आई थिंक दैट patriarchy actually you know binds men in a certain kind of a stereotype as well. Yeah. So which is why for me अगर फेमिनिज्म की लड़ाई सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए भी है कि you know आपको Absolutely. you can be the man you want to be, you know, and I actually think मतलब I know it's easier said than done कि ये पूरा आइडिया ना कि मर्द ब्रेडविनर है, Yeah. क्यों क्यों अगर हम औरतों को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको हाउसवाइफ या क्या व्हाट्स इट कॉल्ड ना Homemaker. होममेकर बनना है हमारे कल्चर में and your film deals with that, right? Yeah, Key Key and Ka was brilliant. Do men have that choice in our society? Not No, really, it was the right? first time. I think that's why it was a difficult subject also for Yeah. people to digest at that time. Yeah, so absolutely. So, you know, even the most, I think, educated, liberal people have very, very rigid views. So, ये thinking कैसे change हो सकता है? I mean, I think कि मेरे को हमेशा यही लगता है कि education सही मायने में Yeah. वो चीज़ होती है जो आपको ज़्यादा empathetic बनाए, मतलब ज़्यादा आपके अंदर एक सहानुभूति पैदा करे दूसरों के लिए, और दूसरी चीज़ आपको सवाल उठाना सिखाए अपने से सबसे पहले. Yeah. You know, दूसरों पे सवाल उठाना सबसे आसान चीज़ Yeah, है. that's the most easiest. Yeah, but अपने आप से भी तो सवाल पूछो कभी कभी. And that's actually something that I am also like I feel like right these days I'm like thinking about that a lot because I'm like यार ठीक है ये सारा ट्विटर पे ये ट्विटर वॉरियर का ये सब, but am I becoming like too negative? Like I am think I? it might make you negative. Yeah, you know, like People get offended, you know, at sexist jokes also. Yeah. I mean, I feel that. But some people think that it's too much, you know, to get offended on everything. I mean I think that you know if अगर हर चीज पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कहीं पे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो रहे हो. I mean Yeah. it's okay. But Like do you think that Twitter and Instagram और जो लोगों के opinions है, जो trolls है, it is affecting you in a way? I just feel कि you know आप सुबह उठते हो और सबसे पहली चीज़ अब हम अपने स्मार्टफोन चेक करते हैं व्हाट्सएप के कितने मैसेजेस आए, फिर ट्विटर, फिर इंस्टाग्राम, और ट्विटर पे अगर आप यही देख Is रहे that हो. what you do the first thing? Yeah, you do? this is a most unhealthy lifestyle is mine. Is yours. हाँ, first I sleep at 5 in the morning, wake up at 12:31. So यहाँ पहुँचने के लिए ऐसे मैंने और बहुत you वो sleep किया at 5-6 in the morning, आप Twitter पे हाँ रात अपने में trolls के वो पढ़ रहे हो. ट्रोल्स के या रिप्लाई कर रही हूँ ये सब, but I am now trying to change that. Yeah, you have to change that. Yeah, so it's just like a really toxic kind of way to start your day, right? Like I a think stupid so. day way. So I think कि आजकल मेरी ये सेल्फ क्वेश्चनिंग चल रही है, जैसे पॉजिटिविटी कैसे लाओ अपने लाइफ में. You have to do that. Swara, I think that I have two things to say. Firstly, of course, thank you for coming on the show. But I think that talking to you, I always get to realize that I am somebody that I want to learn more. And I not only learn from you as an artist, when I worked with you in Veere, I was always amazed when you were giving your shots. I admire the fact you're such a method actor, that learning, that you know, that kind of passion that you had on the set. I admired that, and I always admire your zest now for being so strong and so opinionated. I get to learn. I've learned a lot on this lovely chat. Of Thank you so course. much, Swara, for coming on my show, What Thank Women you. Want. Lovely. Thank you.